thank you for joining us and thank you for providing great space to be here. Partners who are here, thank you so much, and looking forward to some networking process. Thank you so much, Anna, for your inspiring words. So, as I mentioned, we're all here to celebrate International Working With Say and to see a mark significant milestone in our collective journey to have a more inclusive and equitable world. So, as our chief guest, I'd like to invite Saniya Amjad, who's amongst us right now, to share with us her journey of supporting her daughter Arfa Kareem in her achievements. Assalamualaikum everyone, and I'm really honored or given a title today. It's not that I'm sister and engineering in Harvard, but I feel honored once I'm introduced by the name of my daughter that I am mother of a public boy. So if you could try to for me. और भी सारे हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो दिस इज एक ट्रू एग्जांपल कि किस तरीके से एक फीमेल को हमने भी एम्पावर और ये पेरेंट्स का रोल होता है। जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है तो उसमें हम हमेशा ये भूल जाते हैं कि हमारी कुछ लिमिट्स होती हैं और हमें कभी भी ये सोचना चाहिए कि हम शायद जो लोग कहते हैं कि वी आर सेल्फ मेड, नोबडी इज सेल्फ मेड इन दिस एंटायर वर्ल्ड, वी नीड डिफरेंट पीपल्स टू हेल्प अस, मेबी दे आर योर ब्रदर, मेबी दे आर योर कोच, मेबी दे आर योर मदर, फादर, एनीबडी टू हेल्प यू इन दिस जर्नी. Always acknowledge their contribution towards your success story. उनको मत भूला करें. आपको ऑफिस में बहुत सारे लोग चाय भी पिलाते होंगे और आपका कमरा भी साफ करते होंगे, तो never forget them. उनको थैंक यू कहना मत भूलिए, because we are not alone here in this society and we always need males, leaders like maybe a father, brother, husband and then a son, because if they are not there, so we can't do anything. We are helpless in front of them. थोड़ा सा अगर इस बारे में आप सोचें तो मैं हमेशा ये समझती हूँ कि if Arfa was empowered, she was empowered by her father. Even I am empowered by my husband. और we are lucky, जो अगर फीमेल की बात है तो फीमेल्स माशाल्लाह they are so lucky to have so much. कि जब बात होती है तो जन्नत फिर माँ की जरूर मिले, उसको तो नोबडी कहे ना. इससे ज़्यादा एम्पावरमेंट जो अल्लाह ने हमें दी है, मैं नहीं समझती कि हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत है. यस, जब बात आती है प्रैक्टिकल लाइफ की तो डेफिनेटली I think that girls should try to achieve very positive things in their life, not only achievement in professional, but in the personal life as well. They should become a role model. They should demonstrate their good deeds to their children so that they follow them. Because जो हम कहते हैं हमारे बच्चे they don't do that, but जो हम करते हैं अपने actions speak louder than words, तो वो definitely they follow us. तो मैंने अक्सर घर में हमेशा ये देखा है कि सारे लोग अकेले हो गए हैं, they're living separately, फैमिली जब कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, जो हम कभी बचपन में इतनी रिमांड कोई ना कोई ज़रूर यहाँ बैठे हैं पर जिनको ये याद होगा कि बचपन में जो हमारा माहौल होता था तो वी हैव फैमिली के पास, तो वो रिश्ते, वो एहसास, वो एम्पैथी, वो लव, वो सब कुछ कहीं भूल गया है. तो आई थिंक दिस इज अगेन अ टाइम कि जिसमें अगर हमने अपने बच्चों को वी हैव टू leave a positive legacy for our children, follow that, carry that. तो उसके लिए हमें रोल मॉडल बनना पड़ेगा. तो रोल मॉडल बनने के लिए आजकल जरूरी होता है आपके एक्शन जरूरी हैं आप करते हैं. और हमेशा मुझे लगता है कि जो घर में एक बात होती है हस्बैंड और वाइफ की, तो उसमें एक हस्बैंड इज द बेस्ट पर्सन टू एम्पावर यू. अगर आप प्यार से, अगर आप अपनी लिमिट्स में रह के उसके साथ अगर आप उन्हें कहेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि आजकल का कोई भी हस्बैंड ऐसा है जो नहीं चाहेगा कि उसकी वाइफ स्ट्रॉन्ग ना हो. और जब डिजिटल लिटरेसी की बात हम करते हैं या बच्चियों की बात करते हैं तो उसमें थोड़ी सी ये बात ज़रूर आ जानी चाहिए कि बच्चियों को भी ये चाहिए कि शिकवे ज़ुल्म शर्फ की बात ना करें. माशाल्लाह दे आर ऑलरेडी प्रिविलेज्ड, दे हैव एवरीथिंग विद देम. घर है, गाड़ी है, साथ है किसी ना किसी का, पढ़ी लिखी है, सेहत है. सेहत कोई खरीद सकता है, खरीद सकता. तो अपने आप को वो जो एक थोड़ा बेचारगी वाला एलिमेंट है वो नहीं होना चाहिए. आप ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं, आप ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हैं. आपको फर्दर अवेयरनेस की जो ज़रूरत है
उसमें सिर्फ ये है कि मुझे लगता है कि अभी थोड़ी सी अवेयरनेस को फिल्टर करने की ज़रूरत है। हमारी मैंने देहात की बच्चियों की, ये मैं सारी ओवरऑल बात कर रही हूँ, ये मत समझिएगा कि आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन। तो जो फीमेल बच्चियाँ जो देहात से जिनका ताल्लुक है, मैंने उन्हें ज़्यादातर देखा है कि उनके हाथ में टेक्नोलॉजी तो आ गई है, बट दे डोंट नो द यूजेज ऑफ पॉजिटिव यूजेज ऑफ दैट टेक्नोलॉजी। क्या करती हैं वो कि उन्हें थोड़ा सा अवेयर करने की ज़रूरत है कि ये टेक्नोलॉजी जितनी पॉजिटिव है उसके उतने ही नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आप पे आ सकते हैं। तो उसके लिए उन बच्चियों को प्रिपेयर करें। वर्क प्लेस पे जो आपकी जूनियर्स आती हैं, जो आपके डिफरेंट रोल्स में हैं, उनको प्रिपेयर करें। जैसे मेरे घर में काम करने वाले बच्चे होते हैं, हेल्पर्स हमारे, तो मैंने भी उन्हें डिजिटल लिटरेसी में पीछे नहीं छोड़ा। सॉरी। उनको वो मैंने एक बच्चे में देखा कि उसमें वो बड़ा थोड़ा सा उसमें क्यूरियोसिटी थी लेके टैब को, कंप्यूटर को, स्मार्टफोन को। तो मैंने थोड़ा सा उसको चेक करने के लिए मैंने कहा अच्छा ये दिखाओ तुम क्या कर सकते हो इसमें से। बहुत सारी चीज़ें से मुझे करके दिखाई, उसके अंदर टैलेंट था, मैंने देख लिया। मैंने उसको फिर वो अपॉर्चुनिटी दी, मैंने उसको अपना मोबाइल दिया, मैंने कहा अच्छा एक और लेके दिया, मैंने कहा चलो इसमें से सीखो तुम क्या कर सकते हो, चलो ये छोटे छोटे क्लिप बनाया करो बेटा, तो तुम्हें बना। फिर एडिट किया क्योंकि उसको एनवायरनमेंट ऐसी दी और उसको अपॉर्चुनिटी दी और उसको सपोर्ट दी। तो हमारा एज अटफा की बात करूँ तो अटफा की लेगेसी को लेके चल रहे हैं और हर इज राइट फ्रॉम अटफा's whole life। उसने कहा था कि आई वांटेड टू मेक डिजिटल वैली इन पाकिस्तान। जब वंस शी मेट मिस्टर बिल गेट, तो वहाँ पे क्या बात हुई, वहाँ पे जब बिल गेट्स ने उसको कहा कि अटफा आई वुड लाइक यू टू वर्क विद मी समडे हियर, तो उसने जवाब दिया था, उसने कहा यस डेफिनेटली आई विल कम, आई विल गेन माय एक्सपीरियंस एंड देन आई विल गो बैक टू सर्व माय नेशन। तो उसका ये एम था टू build digital valley, and secondly she wanted to educate each and every single individual youth of Pakistan by providing them skill based training, जिसमें अटफा करीम फाउंडेशन is providing that platform for the youth। हमारा टारगेट है कि by 2028 we want to train 1 million यूथ ऑफ पाकिस्तान। तो हमारी दुआ भी कीजिएगा कि हम इसमें कामयाब हो जाएं और हमें साथ भी हमारा दीजिएगा। वी आर ओपन टू एवरीवन, बिकॉज मैं समझती हूँ कि अटफा जग का जो अपना एक रोल है, दैट इज़ ही इज़ एग्जाम्पल एंड पॉजिटिव फेस फॉर पाकिस्तान। और दुनिया में जब उसने अपना नाम पैदा किया तो इसकी वजह से जो एक इम्पैक्ट था उस वक्त के हालात में, अगर मैं इफ आई टॉक अबाउट बैक टू 2004, तो वो वाले हालात थे कि जब पाकिस्तान को बड़ा दहशतगर्द मुल्क और पता नहीं टेररिस्ट और ये वो समझा जा रहा था। और उसमें उस वजह से जब अटफा ने भी पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज सामने रखा, दुनिया में बताया, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था, टाइम था। तो हर बच्ची हमारे लिए अटफा की तरह है और हर लड़की हमारे लिए अटफा की तरह है। और मैं ये समझती हूँ कि जब हम इन्वायरमेंट बच्चियों को ये देंगे और साथ सपोर्ट अपनी देंगे, तो कोई भी बच्ची किसी से कम नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और आपके लिए मेरी बहुत सारी दुआएं हैं। जैसे मैं सुन रही थी सर्कल वालों के लिए, सदर के लिए, आपके लिए बहुत सारी वेल विशेस हैं कि अल्लाह ताला आपको भी सक्सेसफुल करे। और ये समझती हूँ कि अगर हम इकट्ठे मिलकर काम करें, बिकॉज वी डोंट हैव एनी कॉम्पिटिशन विद एनीवन, हमें किसी को हराना ही नहीं है, हमें तो साथ मिलकर चलना है। तो आई वेलकम यू ऑन अटफा करीम फाउंडेशन एनी टाइम। थैंक यू सो वेरी मच। Thank you, Ms. Samina Amjad, for sharing. Her role, she has played a very integral role in nurturing and supporting the journey of her daughter. And Arfa's success is a testament to why family support is very important for a girl and a woman to make her way in the world. Moving on, I would like to call Sir Khalid Yaqub to the stage and share a few words for joining us in celebrating this special occasion. Thank you very much. Asha, I by nature always like to tell stories. And I can tell you a story which happened to me maybe 10-15 years ago when I was the finance director of packages, my previous employment. And I had a finance department of maybe 150 people, large company, बहुत चीज़ें हम करते थे। After 6 months of joining, I suddenly found, out of the 150 people, we had about 3-4 young ladies working over there in finance and accounts and so on. And I found that they were
by far the better workers. We being business, I mean, आप लोगों की बहुत अच्छी goals and they're up there, but me, my goals is always to the point, low, कि जी business day to day चलाएं हम. And I said, Kiji, why don't we start putting in more girls as people leave, new employment hoti hai. So I started putting in, and I ended up with, out of the 150, we really had something like about 6. Sitting at home. I said, why? I mean, so I said, started sending out a message to our existing group of young ladies who were now getting married and so on, and they would say, कि जी मेरी शादी होने लगी है, I would like to leave. So I would turn around and say, कि जी मैंने कहा ट्रायल लो. इस तरह सोचो कि why don't you get married? 2 महीने 3 महीने छुट्टी लो, सब कुछ करो, do your thing, as I say, and then come back, and we'll employ you. जैसे कि जी वो मेरा खामद ये वो मैं क्या खामद का क्या what I mean define tell me no let's talk about it and I could convince them not all of them but a number of them came back to work with me and it was very good and then I used to do my killer action with them I would turn around and say कि जी अपने पैसे हैं ना महीने की तनख्वाह मिलती है ना मुझे मिलती है मैंने कहा you don't have to go and do this to your husband and that used to clinch the deal for us and we we had a very good what you call achievement record in this. The other thing which happened was that I came back from Harvard doing a management course over there and over there they said we can do financing in this way and that way and like for example the government of Pakistan does these national savings certificates 90s के अंदर early 90s के अंदर there was no such thing as a private savings certificates and so on so packages decided to do that अच्छा we started going through the process so we went to the government SECP ये वो सारी चीज़ें हमने की तो उन्होंने कहा कि आपने अपनी कंपनी की इस प्रोडक्ट की रेटिंग करवानी है हमने कहा वो क्या चीज़ होती है हम भी सीख रहे थे उन्होंने कहा कि जी रेटिंग ये होती है कि लुक एट यू इन टोटलिटी एंड गिव यू a number like पाकिस्तान की रेटिंग मूडीज करता है या फिच करता है तो उन्होंने मैंने कहा कि वेयर इज द रेटिंग एजेंसी कि देयर इज नो रेटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान जी वेयर आर द रेटिंग एजेंसी लंदन बात करें लंदन हमने बात की तो उन्होंने कहा कि ओके वी वर थिंकिंग ऑफ सेटिंग अप एन ऑफिस इन पाकिस्तान हमारा एक बंदा इंडोनेशिया गया हुआ है वो वापसी पर हम उसको कहते हैं कि जी लाहौर रुक जाए बिस्मिल्लाह आ गया तो उसको हमने पहले एयरपोर्ट से लिया होटल में डाला सब कुछ किया एंड वी टर्न अराउंड एंड ही सेड कि जी शो मी योर फैक्ट्री तो ही केम जिस तरह आपने कहा था ना 90s 93 94 में पाकिस्तान they were stated women in the burqas and everything so he came around and he started walking through the packages factory and we took him to our tissue division and in those days the tissue division के अंदर जो यहाँ सारा टिश्यू बन के पैकेजिंग होती थी ना डब्बों की सारी ऑर्गेनाइज वो सारी औरतें करती थी it was about 200 women sitting over there in shifts and there were 3 shifts in one day and they're all women and he looked around over there and he had this Gora turned around and said hey, what are these women doing over there? They came in front of you, they're working. He said, fine, all right, let's go back to your office.
मैंने कहा, would you want to have a look at? कहते no, I don't want to see anything. It can, a company which has women working on it, as far as I am concerned, achieves the basic rating. So you go ahead with your work or rating उसने दे. And that was the time also which combined with all of this, the result orientation which came up from women, because I think probably it's in their nature to be very specific, achieving, and if they promise you something, they do it. So that is all what we need. So I, from a business perspective now, you have my support. And please, don't, if you have to educate a daughter, please educate her. This is what I followed in our own family. And you can see her, she'll be talking to you. So, and the second thing which you need to do is, after getting married, please don't sit at home. ये ना करें. Thank you very much. Thank you so much, sir, for representing QuickOffice and making sure that we celebrate this special occasion. I'd like to call Iman Yaqub to share a few words. Let's ensure that we're mindful of the times due to Ramadan timings. Thank you so much. Hello, Assalamu alaikum. I'm Iman Yaqub, and I'm here to represent QuickOffice. I'm a clinical psychologist who sits here, has a private practice. I'll keep it short and sweet because of the timings. Mental health is important for everybody. Men, women, kids, adults, everybody. But since on Women's Day I'm going to touch upon that, Jo Sadaf said very nicely that when you educate a woman, you're educating, or when you're empowering a woman, you're basically empowering everybody in the nation, an entire family, and then they lead to another family, another family. Mental health mein wohi baat aa jati hai. It's definitely important for everybody, but when we give women that space to take care of themselves and we take care of each other, it helps our entire nation. And wahan somewhere, unfortunately, we are a bit lacking, but we're working towards it. So usme I'm just going to touch upon two reminders that we as women and men can help each other with. Sabse pehle, mental health mein, the thing to remember is that our words matter. Our words matter so much. The moment आप कोई word सुनते हैं या मैं बोलती हूँ, वो कहाँ जाते हैं? We're into air and then right back into our ears. It goes right back in. Whatever we say और जो भी हमारे इर्द गिर्द कोई कुछ कहता है. इसलिए जब पहले बात कर रहे थे to empower kids या आपको space देते हैं, सबसे पहले how do you empower anyone? By giving them support. And where does support start? With your words. Ki beta, you can do this. So what happens to words when you say them? They go out into the air, they come back into our ears, and they turn into thoughts. Words turn into thoughts, thoughts turn into feelings, feelings evolve into emotions, and emotions affect our behavior, our day-to-day life, what we want to do, where we're going, what we're doing, everything is affected, and it starts from words. So first of all, let's start surrounding ourselves by people who will support us, say positive things, and unfortunately sometimes we're not in that situation that a lot of people around us are. आजकल की economic political situation में सबसे पहले negative चीजें सबके मुंह से निकलती हैं, तो you start saying positive things yourself. You start telling yourself, and it's true. You look at yourselves in the mirror every morning when you're getting ready, and you start with, if you don't like something about yourself, you start with, I am a work in progress. Even all of this is a work in progress. When you start with
can consistently work to make our workplaces as inclusive as possible. Assalamualaikum ji, and thank you very much for giving me the opportunity to talk to you all here. और I'm thankful to Allah कि मुझे थोड़ा सा मौका दे दिया कि शायद हम अगर अपने अपने ऑफिस में इस वक्त बैठे हुए होते तो इतना अच्छा वेदर इंजॉय ना कर रहे होते. So thank you very much for the introduction. मैं बहुत मुख्तसर सी बात करूँगी और उसमें चूँकि हम वुमेन डे के हवाले से बात कर रहे हैं तो मुझे ये लगता है कि वुमेन डे इज़ नॉट ओनली अबाउट अ डे जैसे हम सब कहते हैं बिकॉज एवरी डे इज़ बीइंग विद अस. हम हर चीज़ में हर दिन में हर जगह पे हर तरह की सिचुएशन में जो है वो फीमेल्स अपना रोल प्ले कर रही हैं. बट आई एम मोर कंसर्न टॉकिंग अबाउट दोज फीमेल्स और दोज गर्ल्स जिन्होंने अपना सफ़र तय करके एक वुमेन तक पहुँचना है. मुझे लगता है कि हम अब जो वुमेन हम बन चुके हैं, हमें जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली, हमें जिस तरह का एनवायरनमेंट मिला, जो कल्चर मिला, जिस तरह की अपब्रिंगिंग हुई, वी आर विद दैट. लेकिन हमें जो काम करना चाहिए, जो हमारा जो फ्यूचर है, जिन्होंने आगे वुमेन बन के आना है वो गर्ल्स हैं. सो अगर मैं अपनी जर्नी देखती हूँ तो एज ए गर्ल टू वुमेन आई थिंक आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड क्योंकि मुझे एक ऐसा एनवायरनमेंट मिला, एक ऐसी फैमिली मिली जहाँ पे मुझे वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली जहाँ मैं ग्रो कर सकी और जो भी डिस्टिंक्शंस अभी हमारी दोस्त बता रही थी, आई अचीव्ड ऑल दोज distinctions, यानी मतलब going through all the educational academia and progressing through and visiting so many countries and representing Pakistan at many international platforms. लेकिन मुझे लगता है कि मेरी वो जो सारी struggle थी उसमें मेरी family का बहुत ज़्यादा support. But there are so many other around us जो कि शायद इतने blessed इस लिहाज से नहीं है कि उनका जो culture है, उनकी जो family structures हैं, उनका जो system है, environment है, उनके लिए इतना ज़्यादा सपोर्टिंग है. सो अब इसमें आई थिंक वी द वुमेन हु आर लाइक एम्पावर्ड, मैं समझती हूँ हम अकम्प्लिश्ड वुमेन हैं, हम एम्पावर्ड वुमेन हैं. जैसे भी हमें जो भी स्ट्रगल्स करके किया, जिस तरह से भी किया, जो भी बैरियर्स थे, वी ब्रोक ऑल दोस. लेकिन अब हमारा रोल ये होना चाहिए कि हम उनके लिए काम करें जो कि एम्पावर्ड नहीं हैं, जिनको हमारी एम्पावरमेंट की ज़रूरत है. सो वी नीड टू टॉक टू दैम, वी नीड टू रीच आउट दैम. एक्चुअली वी नीड टू रीच आउट दैम. Reaching out those women. अभी मैं few months back I have been to कोयटा, बलूचिस्तान. वहाँ पे बलूचिस्तान एजुकेशन समिट था और वहाँ जाके मुझे बहुत क्लोज इंटरेक्शन करने का मौका मिला क्योंकि हम आमतौर पे जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम ज़्यादातर पंजाब और बड़े शहरों में जो जैसे इस्लामाबाद तक और कराची तक यहीं तक चीज़ें कर लेते हैं और एजुकेशन की बात कर लेते हैं. मेरा चूँकि बैकग्राउंड एजुकेशन के साथ भी है तो एजुकेशन में आपको पता है कि इस टाइम पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं. और फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स आर ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट, यानी पाकिस्तान पहले नंबर पे है जिसमें सबसे ज़्यादा फीमेल्स स्कूलों से पढ़े हैं. अच्छा, जब मैं बलूचिस्तान की आपसे बात कर रही थी तो वहाँ पे ये सूरत हाल है कि वहाँ पे 70-80% बच्चे जो हैं वो स्कूल्स में नहीं जाते और गर्ल्स की वहाँ पे सिचुएशन ये थी कि एक मतलब वहाँ पे खातून ने स्टोरी बताई कि हमने कुछ जब टीचर्स वहाँ पे हायर करने थे और टीचर्स के लिए हमें ये डाटा चाहिए था कि यहाँ पे कितनी गर्ल्स जो हैं वो एजुकेटेड हैं और उन्होंने कुछ डाटा जब निकलवाया तो उन्हें पता लगा कि काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स जो उस इलाके की थी वो एजुकेटेड थी. लेकिन जब स्कूल्स के साथ कंपेयर किया गया तो पता चला कि वहाँ पे जो स्कूल्स हैं वो तो बॉयज़ स्कूल्स हैं. तो ये गर्ल्स ने कहाँ से पढ़ लिया? ये बात मैं जो आपको बता रही हूँ, देखिए कितनी सरप्राइजिंग बात है. मतलब स्कूल्स बॉयज़ के हैं क्योंकि गर्ल्स स्कूल्स तो वहाँ थे, लेकिन जब उनका एक ओवरऑल इमेज देखा गया, एनरोलमेंट चेक की गई या उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्वे किया गया तो फीमेल्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी जो कि पढ़ी लिखी. तो फिर पता ये चला कि वहाँ की फीमेल्स ने, वहाँ की फैमिलीज़ ने अपनी बेटियों के नाम बदल के जो बॉयज़ स्कूल हैं वहाँ पे उनकी एनरोलमेंट करवाई. तो जस्ट इमेजिन कि जिनके अंदर क्वेस्ट है पढ़ने के लिए, इसका मतलब ये है कि जो हम एक बात कहते हैं ना कि हमारी जो अवाम है उसमें शौर नहीं है, हमारे पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनकी बच्चियाँ ना पढ़ें, ये गलत बात है. इसका मतलब ये कि हम सिस्टम उन्हें ठीक नहीं देते.
So we need to provide them a system where they can have their qualifications, where they can bloom, where they can what they wanted to be. So thank you very much. I think it's a very short time. I wish I could talk to you more and tell more things. The weather is fine, but it can be a difficult one as well. So thank you very much, Nabila and CEO of Circle, for inviting me here, and I'm really excited to meet today Arfa Karim's mother. So maybe बहुत भी excitement है, और I think so many other ladies here. Thank you very much. Finally, the sun is here. I thought it was going to rain. Okay, so thank you so much to all the guests who took our time. So now we're going to take some break from our from the inspiring stories that we got to hear, and we have a lucky draw planned for everyone. So I think everyone got handed a number chip, right? Yes. Everyone? Yes. Okay, understood. Areen, can I have you on stage? Hi guys, you also have a check. It's called Human Bingo. Like we play bingo with numbers. So it has a task for everything. Whoever completes it with the signature of the person that they got it from will get a prize, and you can come to see me after this. We are taking 2 lucky draws. Everybody has a check, so we can just request Mehak to pass it to Miss Samina, and she can. Number 18. Do we have number 18? Please अपनी check say. Okay, good, Nabila. Okay, we'll take one more. ये ले ले 69. हमारी टीम खुद ही जीत जाती है, खुद ही एक्टिविटी बनाती है. क्या है तुम्हारा नंबर क्या? 8 है. So, congratulations to our lucky draw winners. We have another winner, 50. Does anyone have 50? Who has 50? This is our last lucky draw winner. 16. No one has 50. Congratulations, winners. So moving on, we have Saima Ali, who has extensively worked on diversity, equity, and sustainable development goals. She has become a relationship builder for women entrepreneurs and small businesses, and is currently serving as an advisor to special assistants to private industry on gender inclusivity to the Ministry of Human Rights and Women Empowerment. So I'd like to call Saima Ali on the stage and share her insight on the significance of the critical role that women play in driving sustainable growth in the world. Thank you very much. I think this is such a privilege to interact with the fantastic people from the academia and business and professional, and so many people who are working from the different organizations and the platforms as well. I will not take much time, but Iman, I must say this is the way you started the conversation. Around the mood and everything. I must say this thing that people over here, they have discussed about the women in technology and the problems they are facing in the different areas, where we are in the gender equality and what number we are doing, what are the initiatives of the government and the other situations and things. Here I would like to talk about, there is a huge difference between the career-oriented women and the biological progress. Women are being on all the time, fighting with all these things. Because we do two things are actually
working totally in 180 degree difference with each other. तो आप जब इस चीज़ को हम जब डिस्कस करते हैं तो हमारी खबरतें जो कि मैंने बहुत बेटे सीओ लेवल पर भी होती है या सी लेवल पर है जिसपे they are facing a lot of mental pressure. The way you said earlier, sir, that when they got married and even if they start coming back to the work at the same time, they are having a lot of pressure in the back of their mind and they are constantly living under some kind of guilt. If a woman is going to some kind of things and multitasking, that's a job, but if a man is doing, he's a hero of the family. So we need to just continue with the things and we need to look at the things in the positive perspective. I will not take much time as the weather is getting worse with the time, but I must say that government is doing a lot of things and as far as technology is concerned, Circle is the best person who can tell. And Circle is playing a vital part and with this organization and the collaboration, I think we are working a lot. Ministry of Human Rights and Women Empowerment is working with, in a different perspective for the equality and the things. And I must say this thing that when we talk about the regulatory bodies, women are the best person who are not only interested in making and creating a best livelihood visibility program, but also the best paymaster in a sense they are responsible and they take their business in a very serious manner. So we need to change this perspective and it is not a public service message that the women have to work because they are more than your 50% population. It is a simple economic rule and this is the simple way, the simplest way. Partners because without them you cannot improve and you cannot have that economic revival in the country. Last but not the least, I must say that we need to understand that the scale and the other things are also very important and at the same time we need to change the general perspective of the society as well. There is a famous saying from a director which I will conclude by remarks over here कि अगर कोई अच्छी फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो उसकी बहुत सी रीजंस होती हैं. मेरी कास्ट ठीक नहीं थी या टाइम ऑफ रिलीज ठीक नहीं थी, लेकिन अगर कोई बुरी फिल्म हिट होती है तो वो माशरे की सोच की अक्कासी करती है. आज हमारे माशरे में हर बुरी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा कदर की निगाह से देखा जाता है. ये एक नफाई फिक्री है. वी नीड टू हैव करेज to support the things which are maybe not according to the flow of the society, but they are in the right direction. So that's the only way we can enhance the positive narrative of Pakistan, positive image of Pakistan, for which I always work in every aspect. Thank you very much. Thank you everyone for staying with us till now in this rainy weather. Before we move to the end of this event, I'd like Sarah Lateef to come on the stage and share what inspiration women who are newly entering the workforce can take from you and all our other guests. A brief introduction. मेरा नाम सारा लातिफ है. I work in the industry as a fashion designer. And I also teach entrepreneurship and fashion both at PIT and LUMS. मैंने जब 20 साल पहले काम शुरू किया था तो ये सब कुछ जो है कुछ भी नहीं था. So मुझे आज बड़ी खुशी होती है कि जो औरतें अब वर्क स्पेस को एंटर कर रही हैं उनके लिए words like terms like gender inclusion and diversity ये टर्म्स कॉइन हो चुके हुए हैं. हमने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए और जो बात कर रहे हैं ये चैलेंजेस कोई दूर पड़े से नहीं आते, कोई माशरे से नहीं आते. हम लोग ही मिलके वो माशरा बनाते हैं जहाँ पे हम अपनी बच्चियों के लिए मुश्किलात खड़ी कर देते हैं. सो इन माई केस ऑल्सो आई डोंट फील दैट I mean I had resistance coming from my mother, from my brother, from my husband, from my sosral. While they wished well from me, but they also wanted me to be part of a society which was not very accepting to women going out and working. So the only way for me to step out was that I started teaching, and teaching at that point also was still considered what I like today a noble profession. Parallel to that, मैंने एक अपना private studio set up कर लिया. यहाँ से मैं conversation लेके जाना चाहती हूँ कि work spaces जो हैं अगर हम उनको औरतों के लिए safe spaces बनाते हैं. So मेरे ससुराल के लिए
मेरे स्टूडियो जाना ऑडियंस को लो कोई बड़ी कैमरे में। स्पेस थी और आज तक मेरे पास बहुत वालिद आते हैं जो आगे कहते हैं कि हम अपनी बेटी को क्यों आपके पास काम के लिए भेजें, हम अपनी बेटियों की शादियाँ करना चाहते हैं, उन्होंने अपने बच्चे पालने हैं and so on. And I think that the environment that my studio provides, और let's say अभी मैं ऊपर नमाज़ पढ़ने गई थी तो सर्कल का यहाँ पे एक लाउंज था जहाँ पे इट्स अ लाउंज फॉर वुमेन। इस किस्म के जो माहौल में छोटी छोटी चीज़ें ट्वीक कर देते हैं, बाथरूम्स के अंदर बेसिक अमेनिटीज़ फॉर वुमेन, चाइल्ड केयर के लिए सपोर्ट, to encourage women that getting married is not a roadblock, to have a child is not the end of the road. So ये इसमें हम as society we are to contribute, and I think with digitization हम लोगों के लिए challenges थे, on-site jobs होनी होती थी and so on. With digitization, I still feel the numbers for Pakistan's home-based businesses and workers is very, very low, but things have changed so much. So no matter what, I think everyone should be working, everyone should be contributing at a point where we cannot fall back on the government. We are empowered ourselves to contribute in whatever way we can. And thank you very much. Lovely event, Sadat. And I wish everyone all the best. Thank you again to all the guests who took out time and came here to celebrate this special occasion with us. I'd like to thank all the guests, especially QuickOffice, for joining Circle in celebrating this special occasion. To all the guests, Ms. Samina Amjad, Afaf Manzoor, Sahar Atif, and Sam Ali, who took our time and shared their journeys with us. It's important to realize that it's important for every woman to take a step towards her life and do what she wants. But it's also important, even more so important, to support other women in our lives, because until every woman succeeds, we won't succeed. So thank you everyone. I'd like to call all the guests to the stage so we can have a group photo. And on that note, I'd like to end this program. Thank you everyone for coming. TikTok. पब्लिक लो पब्लिक तो तुम मुझे क्या कर रहे हो बीच में? क्या
सामने देखिएगा। चलो जाओ मेरे स्टेज अच्छा ये सदफ आगे जो है सर्कल सेवा CEO और क्विक से एक मिनट मैडम सलीमा की बात है उनकी कौन सी यार वो $1 million It's okay. Yes, be good. 10,000 मुझे कर दे मैं मैंने आपको भेज दिया चलो वो छोटी सी नजर भी नहीं आ रही उनके बीच में। मेरी गाल फोटो क्या बनाएंगे वो सेट नहीं करवा रहे हैं सेट कराने के लिए अच्छा पर आ रहे हैं इसीलिए आ रहे हैं और वो आप लोगों के लिए आ रहे हैं हाँ ये आप ही लोगों के लिए आ रहे हैं हम तो बना लेंगे ना हमें तो पता है ठीक है सेटल डाउन करके बनाएंगे सात हो जाए मोबाइल आप किसी पर करा लेते आप बिल्कुल नजर नहीं आ रहे ठीक है वेट करेंगे आप थोड़ा नीचे आ जाएं वेट फॉर पिक्चर चल जाए आप साथ सामने देखें थैंक यू You're all requested to take your seats back. There are a few promotions that are going to be announced. Hold your horses. And we're going to have an open mic for circle. Guests can leave, but circle team. Yeah. Do we have the whole circle team there? Everyone please take their seats. क्या कितना ही हैं So before we move on to the open mic, we have a very special guest amongst us, Tanya Zaghi. She is our DLP graduate who graduated 3 months ago, taking our digital literacy program training. So I'd like to have Tanya Zaghi on the stage. और तानिया ज़हीर हमारे साथ शेयर करेंगी उनका एक्सपीरियंस विद DLP और किस तरह हमारे प्रोग्राम में उनके लाइफस्टाइल प्रोग्राम उन्होंने एक बहन को टोकन फड़ाता ही ना कुछ मिले ना कुछ टोकन फड़ लिया तो नहीं मिलेगा नंबर मेरा नाम हानिया नज़र है मैं बिल्कुल नहीं विषय कुछ क्वेश्चन है 10 महीने का कोर्स कर रही हूँ मैंने 2 मंथ पहले DLP का कोर्स स्टार्ट किया था पहले मेरे पास
काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली ऑनलाइन बिजनेस करने की। काफ़ी मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने पेड बैग्स का बिजनेस स्टार्ट किया और अर्निंग भी हो रही है। और मैं आगे कमेंट करूँगी, आगे भी उसको ज्वाइन करें, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है, अच्छा है यहाँ पे। प्रिंसिपल कौन है? आपके मतलब हेड कौन है, इसको कौन लीड कर रहा है? अच्छा वो जो फ्रंट पे बैठी हैं थी वो खड़ी हैं आई थिंक सबसे आगे। चॉकलेट तो काट के दो। मैं ये कह रही थी आपको, पता है क्या इनका होता है, मतलब इफ्तारी का टाइम, ठीक है, ऑफिस आ जाते हैं, तो जो राहुल है ना वो अकेला नहीं कर सकता, समझ रहे हो ना? इसलिए मैं आपको कह रही थी कि आप 1 घंटा जो है ना, 1 घंटा नहीं तो 30 से 40 मिनट्स जो है ना पहले आ जाए। नहीं कल 6 बजे नहीं आए क्या? कल 6 बजे आए हो ना? Why would they like to stay at circle? Why would they? आपने मेरी बात सुनो, बाहर वाला काम जो है ना वो नहीं करना, कहना सर मेरे हमारे पास बटलर्स कम है, ठीक है, अगर भेजना होगा ना तो किसी और बंदे को भेजना, क्योंकि नबील ने करनी है क्लीनिंग, उसका क्लीनिंग का काम है, अगर वो उसके साथ इफ्तारी में लग जाएगा तो वो क्लीनिंग कैसे करेगा साथ में, ठीक है? तो आप आज जल्दी आ जाना, ठीक है? तो कोशिश करना कि इसके साथ राहुल के साथ हेल्प करवा के नबील को अपना काम करने देना। चलो डन हो गया, ओके। बहुत वॉशिंग की मुझे मेरी है ना रूम्स का Yes, so can I have our guests, our alumni, Tanya Nazar and Ulfat, our DA instructor, on the stage to cut the cake with us and celebrate this day, because I think their success is the most valuable to our organization. So we have Tanya here. Ulfat, can we have you on the stage? Miss Samia Amjad and Sam is on the stage. एक मिनट वेट कीजिएगा जी, सारे इधर पीछे आ जाएंगे यार, अच्छी हो जाएगी। हाँ जी मैंने आगे तरह कर लिया, मैम आप भी पीछे आके बना दें। एक रेसिपी रेडी? आप पीछे चले रनिंग करनी है बाद में।
मैं ना आज चेक करूँगी। The cake is beautiful. If you are fasting, you should at least come to the stage after the event ends to look at how beautiful the cake is. I think everyone was eyeing the cake since the morning. Cake is the so this is what the cake is for. Okay, so we're finally at the open mic. So who would like to come to the stage and tell us why they love working at Circle? Sadia? Okay. उसके बाद सर आदिल. सेक्रेटरी की बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है और वो क्या कहते हैं बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। 2 मिनट चाहिए होंगे अब आपने कहा है तो मुझे आज के दिन की मुनासिबत से अपना एक कॉलम याद आ रहा है जिसमें मैंने लिखा था कि औरत वर्ड के अंदर ही उसकी पूरी डेफिनेशन है। एन से अजमत, वाव से वकार, रे से रहमत और ते से तमकन। जब ये चारों चीजें मिलती हैं तो एक औरत बनती है। अच्छा, सर्कल को ज्वाइन करने की वजह जो है उसके मैं थोड़े से बैकग्राउंड में जाऊंगी कि आज से 25 साल पहले यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दूसरों के एक्सपीरियंस की। मैं अपने आप से शुरू करूंगी कि आज से 25 साल पहले मैंने एक सफ़र शुरू किया था जिसमें मेरे साथ जो थे 3 बच्चे थे और एक मेरी लिटरेचर की डिग्री थी और एक जुनून था, एक लगन थी, एक इस्तकामत थी कि मुझे कुछ करना है। रास्ते का मुझे नहीं पता था, किसी ने मुझे गाइड नहीं किया, किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, लेकिन दिल में एक लगन थी कि कुछ करना है और फिर किया। उसमें सेकंड मास्टर भी किया, उसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम भी किया और इस 25 साल के सफर में कदर हमेशा कहती होती है कि इम्पैक्ट क्या है। तो इसका इम्पैक्ट ये है कि मैंने सोसाइटी को एक फिजियोथेरेपिस्ट दी और एक मैंने ACCA क्वालिफाइड जो ऑडिटर दिया और एक इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर इंजीनियर दूंगी। तो बात ये है, मैं यहाँ पे इसलिए नहीं कर रही कि आप लोग मेरे लिए तालियां बजाएं, मैं इसलिए कर रही हूँ कि मैंने इस सेक्टर को ज्वाइन एक लगन से किया क्योंकि मैंने अपना सफर देखा है कि अगर मैं बदली हूँ, मैं पावर अगली नस्ल बदली है रास्ता दिखाया इंसानों के नाते ये हमारा फर्ज है। अब सेक्टर को ज्वाइन करने की जो वजह है, मैं कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाती हूँ तो मैं हमेशा प्रोफाइल पढ़ती हूँ और ईमानदारी की बात है कि मुझे प्रोफाइल जो सदफ की प्रोफाइल है उससे काफ़ी इम्प्रेस किया। मुझे लगा जो जुनून मैं 25 साल से लेके चल रही हूँ वो जुनून इनमें पाया जाता है, इसलिए मैंने सर्कल ज्वाइन किया कि 2 जुनून अगर मिलेंगे तो तब्दीली जरूर आएगी। सबसे ज़्यादा एक लफ्ज़ है औरत, एन से अजमत, वाव से वकार, रे से रहमत और ते से तमकन। ये चारों इज़्ज़ात जब मिलते हैं तो एक औरत का वजूद बनता है। I know I asked everyone to volunteer, but I would like to call Kawal to the stage because she has been in DMP for I think almost a year. When she was in DMP working as our field officer, and now she has recently shifted to Nano Influencer Academy program, and she is doing amazing work. We are having amazing support, and that has been witnessed by our trainer, obviously, Aisha. Yes, so I would want you share your favorite moment from Circle, like since you've known it. What has your favorite moment? the remote कहाँ है उधर इस मीटिंग रूम में जो
Yes, I think in Nano, all our projects, we are extremely lucky to have very good screening officers, because without a good screening, without suitable participants, our projects won't have the right impact. So it's important to acknowledge our screening team. So now I would like some volunteers. You want just 2, 3, but I'm happy. Okay, Mariam. Yes. Okay, so yes, Mariam. After that, I want people in pipeline. Who would like to come next? Aisha and then Tehseen. Okay, great. So please share why are you at second? Thank you so much. My name is Mariam and I'm one of the lead instructors in DLP. Why am I at Circle? So I joined here when I was a lecturer. I used to teach students. But I'm just talking about someone I knew. सेव करनी है। देख